वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज हमारे पास है Realme 5S दी 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा पावर हाउस, जिसको Realme बुला रहा है। तो देखते हैं कैसा है Realme 5S। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी बॉक्स के ऊपर Realme ने क्या क्या कंटेंट्स लिखे हैं जो इस फ़ोन के अंदर हों। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा है 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा पावर हाउस, 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, स्नैपड्रैगन 665। काफ़ी अच्छा स्नैपड्रैगन प्रोसेसर दिया है। ओके, तो यहाँ पे जो मेरे पास इसका वेरिएंट है वो है 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। क्रिस्टल रेड यहाँ पे कलर है। और कैमरास जो आपको क्वाड कैमरास दिए हैं 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल रियर कैमरा सेटअप है। फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल और इसके डिस्प्ले का जो साइज़ है वो है 6.5 इंचेस। ऑलराइट, तो कर लेते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं क्या है कंटेंट इसके बॉक्स के अंदर। Realme 5S द पावर हाउस, जैसे Realme बुला रहा है। तो सबसे पहले हमें कवर मिलता है जो कि इस केस के अंदर आता है। सो ये है कवर इसका और सम पेपर वर्क्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे मिलता है डिवाइस Realme 5S, क्रिस्टल रेड कलर। चेक दिस आउट, क्रिस्टल रेड का कलर काफ़ी धमाकेदार, चमकता धमकता। तो इसको ऑन कर लेता हूँ मैं। चेक करते हैं कि बैटरी वगैरह क्या क्या है बॉक्स के अंदर। सो यहाँ पे आपको अडेप्टर मिलता है जो कि है 2 एम्पियर फास्ट चार्जिंग। ऑलराइट, देखते हैं इसमें Realme ने टाइप सी दी है या नॉर्मल चार्जिंग केबल दी है। तो यहाँ आपको जो मिलती है वो मिलती है नॉर्मल चार्जिंग केबल, नॉट दी टाइप सी, दैट इज़ दी टाइप बी केबल। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं हम डिवाइस की। तो सबसे पहले इसके हार्डवेयर पे जाएंगे हम। ऑलराइट, तो ये है आपका स्विच ऑन की, the power on key. Here are the quad camera setup on the back, the 48 megapixel camera, the 8 megapixel camera, the 2 megapixel camera and the 2 megapixel camera. Here is the flashlight and this is the fingerprint sensor, all right, on the back. So here are the speakers, the charging cable jack, the headphone jack, the mics, and here is the power up and down keys, the SIM card tray. तो SIM कार्ड में आप 2 सिम्स एंड अ मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब चेक कर लेते हैं इसका कैसा है कैमरा और बाकी के फीचर। तो यहाँ पे डिस्प्ले का साइज़ जो आपको 6.5 इंचेस मिल रहा है दोस्तों, काफ़ी बड़ा डिस्प्ले का साइज़ है। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले का साइज़ मिल रहा है 6.5 इंचेस, काफ़ी बड़ा डिस्प्ले का साइज़ है। जैसे कि अगर आपको सिंगल हैंड यूज़ से करना है आपका ऑपरेट फ़ोन, तो मुझे नहीं लगता कि आपका हाथ इतना बड़ा है कि आप ऑपरेट कर सकें, लाइक थंब आपका ऊपर तक नहीं जाता। तो 6.5 इंचेस डिस्प्ले, इट्स अ वेरी लार्ज डिस्प्ले साइज़। तो डिस्प्ले तो काफ़ी बड़ी दे दी है आपको, वीडियो और गेमिंग में एक्सपीरियंस में अच्छा मिलेगा। प्रोसेसर भी अच्छा है, आपको 665 स्नैपड्रैगन मिलता है जो कि गेमिंग के लिए अच्छा प्रोसेसर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कैमरे की, दी 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल सेल्फी रे कैमरा सेटअप ऑन द बैक। तो चेक करते हैं कैसा है। तो यहाँ पे मैं कुछ क्लिक्स ले लेता हूँ इसके रे कैमरा से, लाइक मैं यहाँ पे इस बॉटल का क्लिक ले लेता हूँ। ऑलराइट, सो हेयर द स्नैप। कुछ और क्लिक्स ले लेता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे रियर कैमरे से मैंने 2-3 क्लिक्स लिए हैं। तो दी 48 मेगापिक्सल कैमरा, हाउ इट इज़ वर्किंग, लेट्स चेक। द रियर कैमरा setup on the back is absolutely mind-blowing. The color quality, the zoom which you can do in the 48 megapixel plus 8 megapixel plus 2 megapixel cameras is absolutely brilliant. तो रियर कैमरा तो इसका काफ़ी धांसू है,
आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसने शॉट्स लिए हैं, सिर्फ सिंगल फोकस ऑन द बॉटल और बाकी चीज़ें it has blurred. So rear camera, no doubt it's having a rear camera, absolutely brilliant. So now also let's check the front camera. How does the front camera works and how it is? Let's take the same photograph with the front camera over there too, and let's see how is the response. So here are the clicks with the selfie camera, the 16 megapixel. Oh my goodness, absolutely brilliant. Brilliant. The 16 megapixel selfie camera is also out of this world. Like, it has got a very brilliant picture quality. You cannot zoom very much because it's not clear, but absolutely, if you are taking selfies, I can say that there will be no problem, and the quality of the photographs will be damn good. Thumbs up for that. So let's go and check what are the features given in the settings. So first of all, let's go to the about phone manual. Where is the about phone manual in this? Let us check. Security. So you have got fingerprint, face lock, smart services, convenience aid. What is this convenience aid? Okay, navigation keys. Like, you can hide the navigation keys or you can use some other gestures. Like, the gestures has been set. If you want to go back, you can swipe from here and like there. So these are the gestures, like going back. So you can set up all the navigation gestures from here, and this is the virtual keys. Okay, you have got these gestures and motions. Battery utilization, you have also got डिजिटल मैपिंग, तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं. अब लेट्स गो टू अबाउट फोन. सो Realme 5S मॉडल RMX 1925, दे हैव अपग्रेडेड इट. कलर OS जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है V6.0.1, the same as the previous devices of the Realme. So 4 GB RAM, but the processor is damn good in this device. It has got a good processor than the Realme 5. It has got a 665 octa-core processor. That's brilliant, awesome, no doubt about it. So this was the about phone features of the Realme device. Not so special in that. And the inbuilt apps you are getting are from the Realme and some linked like paid partnerships apps like Paytm and others. So let's also check the sound quality of the device. कैसी है इसकी आवाज़ क्वालिटी. साउंड चेक करते हैं. तो यहाँ पे notifications में आते हैं. बैटरी परसेंटेज, if you want to show, you can keep it. Okay, so where is the sound? Oh, here it is. So let's go for the maximum. Sound quality, not bad. Great sound quality. Thumbs up for that too. Powerhouse, no doubt about it. 5000 mAh की बैटरी, massive. Camera quality, धांसू. Both front एंड द बैक कैमरा, दोनों कैमरा क्वालिटी धांसू. 5000 mAh की बैटरी, ब्रिलियंट. डिस्प्ले क्वालिटी एब्सोल्युटली फाड़ू, और डिस्प्ले का साइज ऑल्सो धमाकेदार. गेमिंग के लिए 665 स्नैपड्रैगन इज़ रियली गुड इन द रेंज ऑफ 10,000, लाइक मैसिव. बहुत ही अच्छा काम कर रही है Realme. जैसे कि 10,000 की रेंज में आपको 665 स्नैपड्रैगन मिलता है. इट्स नॉट बैड एट ऑल. You can enjoy PUBG, Call of Duty and other gamings. Sound quality, massive, अच्छी sound quality, not bad at all. Operating system also good. So all over देखा जाए, अगर मैं इसको 10 से out of 10 rating देना चाहूँ तो absolutely I am going to give it like 9. Yeah, it deserves a 9 rating, but it's little bit thick, like मोटा है, due to its 5000 mAh battery, but the color of this device is also massive. So that's all for today. So this was the Realme 5S. तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में,
और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी अगली वीडियोस को देखना ना बंद पाए। थैंक्स, दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट।